Hello friends, welcome to Ecoholics YouTube channel. My name is Avinash Agarwal, and in this video I'll be discussing with you economics current affairs for 26th July 2024. So we have two articles that I want to discuss with you. So please note that it is not as if that we will not be sharing questions. So we'll be resuming the exercise of sharing questions per article from Monday. Okay. So until then, let us move ahead. So we have spoken a lot about budget in the last budget and economic survey in the last couple of days. काफी अच्छी बातें हमने अंडरस्टैंड करी है कि बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोला गया है, and mostly we have seen positive articles regarding both these documents, that is budget and economic survey. आज के जो मैं दो आर्टिकल सिलेक्ट करे हैं, डेलिबरेटली जानबूझ के मैंने दो ऐसे आर्टिकल सिलेक्ट करे हैं जो इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग अ sort of a critical analysis of some of the major ideas which have been presented in economic survey and the budget. So let us start with economic survey. Okay. So survey का जो खुद का जो economic survey, forget the content, forget the chief economic advisor. So economic survey in itself is becoming a little bit of a academic exercise. It's an annual document, right? Budget के एक दिन पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्रेजेंट करते हैं. इट इज रिटन बाय द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री. बट इस इकोनॉमिक सर्वे की खुद की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है. एक दिन आता है, 4 घंटे इसके ऊपर बातचीत होती है, उसके अगले दिन वी गेट द बजट. एक्सेप्ट फॉर प्रॉब्ली यूपीएससी काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स, नोबडी केयर्स अबाउट व्हाट इज रिटन इन द इकोनॉमिक सर्वे. तो जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट हैज बिकम एन एकेडमिक एक्सरसाइज. ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इट हैज बिकम एन एकेडमिक एक्सरसाइज बिकॉज सम थिंग्स हैव एक्चुअली happened through economic survey, but बहुत ज्यादा कुछ impact नहीं रहा है, right? कभी कभी जैसे for example I vividly remember that when Arvind Subramaniam was the chief economic advisor, so he had spoken about the JAM Trinity, Jan-Dhan Aadhaar Mobile, okay, and that JAM Trinity became a reality. He was the one who spoke about the twin balance sheet syndrome, that banks are also not doing well, corporates are not also not doing well, और इसकी वजह से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है. So that twin balance sheet syndrome, it became something which we continue to use. A term that we continue to use was a term that he introduced in the economic survey that he had written, right? So what I'm trying to say is that कि economic survey really needs to shine. ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स जो है ना इंडिया के वो सबको मालूम है बॉस, उसमें कोई नया नहीं है, right? So we need to come up with solutions which are well regarded, well researched, and are immediately acceptable to large stakeholders. तो वो प्रकार का अगर काम economic survey करे तो then it is relevant, otherwise it is not, right? Now that is in general. Now let us speak about economic survey 23-24. So obviously it is coming at a crucial time. Indian economy की 8% plus की growth rate हुई है, but our recovery is fragile. हमारी रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रेस में है, हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट उतना स्ट्रांगली ग्रो नहीं हो रहा है जितना हम चाहते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में आज भी चैलेंज है. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना तेजी से नहीं हो रहा है जितना गवर्नमेंट चाहती है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट गवर्नमेंट ने मैसिव कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन करे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत ही सुंदर पीएलआई स्कीम भी ऑफर कर दी है, गवर्नमेंट ने खुद ने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है. सारी चीजों के बाद भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, राइट? सो सर्वे ने क्या करा, एंड आई एम श्योर कि आपने इस चीज को नोट करा होगा, मैं ये चीज कहना चाहता था, मैं वेट कर रहा था. सर्वे सेज वेरी क्लियरली दैट बस प्राइवेट सेक्टर की गलती है, अब वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए. सो इट्स बेसिकली पेंटिंग द प्राइवेट सेक्टर एज अ विलेन. अगर आप सर्वे के लैंग्वेज को देखेंगे, वर्ड्स को देखेंगे, जो उसका डायरेक्शन उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सो यू विल क्लियरली बी एबल टू सी दैट सर्वे फील्स दैट की वी नीड टू डू मोर. ठीक है, this thing needs to do more, the private sector. But the point over here is that कि आपको मतलब you cannot say that the private sector needs to do more, they need to invest more, they need to lift their weight, etc etc. Government has done its bit. That's not very convincing. Why? I'll tell you why. The author believes that कि देखिए हमारा अप्रोच क्या है कि हमने कॉर्पोरेट्स को एक सब्सिडी दे दी है, एक कैशबैक दे दिया है, कि हमने टैक्स कट कर दिए हैं, आपको पीएलआई स्कीम दे दी है, इन्वेस्ट कर दिया है, अब आपकी बारी, राइट? पॉइंट ओवर हियर इज दैट कंपनीज को आपने ये सब दे दिया है, अच्छी बात है, कंपनीज will never say no to anything, corporates will never say no to anything that is coming into their pocket, but they will not remove money out of their pocket when they see that the demand is not strong enough, or when they feel that the macros are not good enough.
अब इंडिया के अंदर लोगों की इनकम अगर डिक्लाइन हो रही है, लोगों का पास परचेसिंग पावर नहीं है, इमीडिएटली आउट ऑफ द मेट्रोज आप जाते हैं तो लोगों के पास उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परचेसिंग पावर है ही नहीं कि आप बहुत बड़ा कुछ इन्वेस्ट कर सके. सो व्हाई विल दे इन्वेस्ट, राइट? So one of the important things that the survey needs to talk about, we need to talk about, is that how do you sustainably boost demand in India? Who will create that next dose of demand that is required, right? Because employment quality and employment quantity both is suffering in India. So where will the income and the demand jump come from? Okay, these are the real problems, right? We have seen report after report which is saying that whether it is informal sector or whether it is MSMEs, there is a decline in employment. We have seen report after report which is saying that various sections of our society have seen a drop in their real earnings in the last 7 years, right? So what about these problems and how who is going to address these problems? इसके बारे में कौन बात करेगा? तो सर्वे उसके बारे में बात ही नहीं करता है दोस्तों, in a any significant way. Similarly, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव करना है. सर्वे सेज दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Its survey also says that non-farm diversification is very important so that labor force can be absorbed in rural areas, right? But the idea over here is that how do you go about doing that, right? Market reforms करवाना है एग्रीकल्चर के रिवाइवल के लिए, फैंटास्टिक, एवरीबडी नोज दैट. डाइवर्सिफिकेशन करवाना है, फैंटास्टिक, एवरीबडी नोज दैट, राइट? How do I do it? How does the government do it in a manner such that some goals are actually achieved? So what I'm trying to say is that कि कुछ नया निकल कर नहीं आ रहा है. It's just that we have identified the problems which have always been identified, and we have just given some makeup solutions which are not working, right? एग्रीकल्चर के अंदर जो रियल इश्यूज है, दैट इज डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेन प्राइजेस एंड फॉलिंग इनकम्स. ये है एग्रीकल्चर के रियल इश्यूज इन इंडिया. बिकॉज गवर्नमेंट का खुद का इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, अगर आप लास्ट 40 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, सो इट्स नॉट गुड इनफ. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर कब होएगा? जब फार्मर के पास अच्छी इनकम होगी तब होगा. वो कब होगा? जब फार्मर को अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अच्छे प्राइजेस मिलेंगे, तब होगा. So we need to focus upon these three problems over here: declining investment, uncertain price and falling income, right? उसके ऊपर ऊपर साथ में क्लाइमेट शॉक्स आने लग रहा है, उसके ऊपर ऊपर साथ साथ में फूड इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर आने लग रहा है, राइट? सो दीज आर द रियल चैलेंजेस, एंड इस रियल चैलेंज के ऊपर कोई बात नहीं है. तो जैसे हमने ऊपर देखा कि वी आर सेइंग कि बस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब हो जाना चाहिए, हाई टाइम की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज सेटिंग ऑन रिकॉर्ड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा. अब हाई टाइम में हो जाना चाहिए. अरे कैसे होगा भैया? जब डिमांड अगर सामने कमजोर दिखाई दे रही है तो होगा कैसे? तो आप डिमांड को कैसे सस्टेनेबली बूस्ट करने वाले हैं, उसके बारे में तो आप कुछ बता नहीं रहे हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर का रिवाइवल करवाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट रिफॉर्म्स करवा दीजिए, डाइवर्सिफिकेशन करवा दीजिए, एवरीबडी नोज दैट, राइट? लेकिन कुछ डिटेल्ड रोड मैप कहां पर है कि इन्वेस्टमेंट, प्राइजेस, इनकम के लिए क्या 4-4, 5-5 स्टेप लिए जाने चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम को हम परमानेंटली सॉल्व करें, राइट? तो अगेन सॉल्यूशंस आर नॉट कमिंग. One of the lines that was mentioned in the survey which will be highly criticized and analyzed, right, is this one over here कि देखिए, फूड इन्फ्लेशन तो इंडिया के अंदर एक ऐसी चीज है जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल नहीं कर सकता है. तो आप एक काम करिए, स्टॉप फोकसिंग ऑन फूड इन्फ्लेशन, राइट? रिमूव फूड इन्फ्लेशन फ्रॉम your headline inflation, and don't try to target food inflation through, let's say, monetary policy tools. ठीक है? So if this is the suggestion कि delink food inflation, ठीक है? The idea is that food inflation जो है इंडिया के अंदर वो structural है और seasonal है, right? And monetary policy is not going to be immediately successful. But ये जो food inflation को delink करने की बात आई कि delink the food inflation from headline inflation, right? इससे प्रॉब्लम ऑफ फूड इन्फ्लेशन जाएगा नहीं, ये प्रॉब्लम छुप जाएगा, राइट? एंड ये प्रॉब्लम जो छुप जाएगा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज हाफ ऑफ द कंजम्पशन बास्केट इंडिया के अंदर आज भी फूड आइटम्स का है, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री जहां पर काफी सारे हाउस होल्ड्स का मेजर एक्सपेंडिचर आज भी फूड ही है. तो इस प्रॉब्लम की तरफ ना देखना इज इट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम? I am not sure. So rather than say कि dealing food inflation from government's inflation targeting framework, we could have probably come up with such certain measures कि भैया फूड इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से कैसे सॉल्व करा जा सकता है, राइट? क्योंकि देर आर ओनली फ्यू क्रॉप्स, टोमेटो, ऑनियन, पोटेटो, पल्सेज एक्सेट्रा, जिनकी सप्लाई चेन को थोड़ा सा ठीक कर देना है इंडिया के अंदर, एंड चीजें मैनेज हो जाएगी. इंडिया के अंदर मेरे को ये समझ में नहीं आता है
कि फेयर एंड लवली जो है इंडिया के कोने कोने में मिल जाता है, इतना बढ़िया उसका सप्लाई चेन है, कभी उसके शॉर्टफॉल नहीं होती है, कभी भी उसका मतलब आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है, कभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारी एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन को उल्टा घुमा के ये करने के अंदर इतना बड़ा क्या प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारे पास आईआईटीज है, आईआईएम्स है, सारी चीजें हैं, राइट, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं इंडिया के अंदर। मतलब रादर देन से कि फूड इन्फ्लेशन को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें, हम बोल रहे हैं फूड इन्फ्लेशन को आप देखना बंद कर दो। अरे इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीबडीज प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, राइट। सो क्लाइमेट चेंज के अंदर ठीक है, वी हैव टू टैकल द प्रॉब्लम, बट ब्लेमिंग द डेवलप्ड वर्ल्ड्स, राइट, कि आपने स्ट्रिक्ट टारगेट्स दे दिए हैं, आप पैसा नहीं देते हैं हमारे को, राइट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी, राइट। So we have to come up with solutions, our solutions that will work for us, right? So what is the author of this particular article saying? He's saying that was ultimate responsibility, whether it is for nurturing demand, whether it is for inducing employment generation, whether it is for attracting investment, whether it is for anchoring prices, whether it is for boosting income. So the ultimate demand responsibility in these critical areas, at least as far as from a policy making point of view is concerned, it lies with the government, right? So proper idea जो है इसको लेकर आने की जरूरत है, जो कि something that we have not been able to do, ठीक है। So three important takeaways out of this particular article is the first one over here, that blaming the private sector, कि boss you are not investing, you're not doing sufficient, we have done everything, right, that's not going to be anybody's solution, okay, this is a false narrative, point number one, okay, point, because there are real problems and these are the real problems that need to be addressed, okay। Point number two, again, right, एग्रीकल्चर को रिवाइव करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। एग्रीकल्चर के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। थर्डली, फूड इन्फ्लेशन को बोल देना कि डीलिंक कर दो, उसके ऊपर ध्यान ना दो, इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, राइट, इट्स जस्ट गोइंग टू हाइड द प्रॉब्लम आउट ऑफ द व्यू। फाइनली, क्लाइमेट चेंज या इसके ऊपर टू ब्लेम द डेवलप्ड वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। You need to come up with your own measures while you are expecting more cooperation from the rest of the world. So that is the economic survey. Now coming to Viksit Bharat ka budget, okay, now let us do a little bit of this thing. Now we are standing on a weak bedrock for Viksit Bharat. Now first let us, so this article is basically a model article. Isme we see the first a reporting of what has happened in the budget a little bit, then we see that what are the good points in the budget a little bit, and then we see that what are the bad points in the budget or what is missing in the budget a little bit, and then we come to a conclusion. So this is typically how you should sandwich your points, right, that you give the information, give the pros, give the cons, and conclude, khatam, right? So the idea over here is that there are three things that this particular article is trying to analyze, right? First, this article is trying to analyze the फिस्कल स्टांस ऑफ द बजट। फिस्कल स्टांस ऑफ द बजट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो भी 48 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करने वाली है, राइट, तो वो 48 लाख करोड़ कहाँ स्पेंड करने वाली है, इज दैट अमाउंट अप्रोप्रिएट, इज द डायरेक्शन ऑफ स्पेंडिंग अप्रोप्रिएट, कीपिंग इन माइंड द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। सेकेंडली, वी विल सी कि जो मे इलेक्शंस के आउटकम्स हैं, राइट, हैव दे बीन एड्रेस्ड, जो मे इलेक्शन से रिलेटेड इम्प्लीकेशंस है, हैव दे बीन एड्रेस्ड, राइट। एंड थर्डली, जो विकसित भारत का हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, क्या हमारी कंट्री को पोजीशन कर दिया गया है उस गोल को अचीव करने के लिए, राइट, वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री एंड सो ऑन बाय 2047, करेक्ट। सो क्या हम पोजीशन भी है टू अचीव दैट गोल, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो व्हाट इज द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट? द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इज दैट ग्रोथ इज स्ट्रॉन्ग, राइट, inflation is within the limit of RBI's tolerance band, current account deficit is below 1% of GDP, so it is not a problem. Government debt has declined from around 58% to around 56%, so that is on the right track. Capital expenditure in the budget is 11.1 lakh crore, so that is not a problem. Fiscal deficit has been aggressively cut down from 5.6% to 4.9%, that is not a problem. Revenue growth is buoyant at 14.7%. RBI has done record transfer to the government, that is not a problem. Revenue expenditure has been contained, that is not a problem, right. Debt to GDP ratio, like I mentioned, has been on the declining trend.
fiscal deficit next year will also be further declining, right? And thereafter our debt to GDP ratio will be coming down year on year basis, not a problem. So these are the macroeconomic conditions. Okay, सो ये सेंस के अंदर जो फिस्कल स्टांस है, राइट, कि हमारी जब इकोनॉमी स्ट्रांगली अच्छी चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो को वी आर ब्रिंगिंग डाउन इज गुड, फिस्कल डेफिसिट को जिसको हम लोग नीचे उतार रहे हैं दैट इज ऑल्सो गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने जो करटेल कर रखा है दैट इज ऑल्सो गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने अच्छे से बूस्ट करके रखा हुआ है दैट इज ऑल्सो गुड. So this is a good part. So the fiscal stance of the budget, keeping the current macroeconomic context in mind, there is nothing wrong in that stance particularly, right? So that is fine, right? Coming to the May election outcomes, right? अब क्या हो गया ना दोस्तों, May election outcomes की वजह से now the BJP is dependent on JDU and TDP, right, for staying in power. तो what has happened is that बिहार एंड आंध्र प्रदेश को काफी जेनरस पैकेजेस दिए गए हैं. ऑफ कोर्स थिंग्स हैव बीन डन फॉर ऑल द स्टेट्स द एंटायर कंट्री, बट बिहार एंड आंध्र प्रदेश को अच्छे पैकेजेस दिए गए हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच other states, they are not so happy, other chief ministers are not so happy, right? So this is a little unfortunate, right? But this is coalition politics, you can't really do anything much about it anyways, right? So far as employment and livelihoods are concerned, financial incentive schemes etc have been announced. Some new measures, several schemes, new measures have been announced for supporting the MSMEs, for supporting the informal sector, right? So उसके ऊपर मतलब काम करा गया. So the focus is not on food subsidy मनरेगा, right? Focus is on, let us say, formal sector, informal sector, MSME sector, right? इन सब के ऊपर focus करा गया है, right? Incentives have been given. Now we need to see whether the incentives are strong enough for private companies to accept these incentives and create jobs. Again, थोड़ा सा doubtful है because this is employment based incentive scheme, like we discussed yesterday, that this is employment based incentive scheme. तो मेरे को अगर सरकार से कैश बैक मिल रहा है और उसके लिए पहले मेरे को खुद को खर्चा करना पड़ रहा है, राइट, तो क्या मैं वो करना चाहता हूँ? मतलब अब इट्स लाइक आई विल परचेज एन एप्पल का आईफोन एंड आई विल गेट सम कैश बैक फ्रॉम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, राइट? तो मेरे को तो दोनों तरफ से फायदा हो गया कि मेरे को एक तो एप्पल का आईफोन खरीदना भी था क्योंकि मेरे को खुजली हो रही थी, राइट, एंड सेकेंडली जो है आई गॉट अ कैश बैक, तो मेरे तो दोनों तरफ से फायदे हो गए, करेक्ट है? एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंसेंटिव स्कीम में हमारे को हम क्या बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयर तुम एक एम्प्लॉय खरीद लो, ठीक है, और हम आपको कैशबैक देते हैं वन वे और दी अदर के थ्रू, ठीक है? तो वो एम्प्लॉयर को बहुत इच्छा होनी चाहिए एम्प्लॉय को हायर करने की, तब जाकर वो करेगा ना. सिर्फ कैशबैक के लिए वो खर्चा थोड़ी कर देगा कि हाँ मेरे को कैशबैक मिलने वाला है 5%, सो लेट मी स्पेंड 95%. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कब करेगा? वो तब करेगा जब देयर इज अ जेन्युइन नीड टू रैंप अप प्रोडक्शन फॉर विच ही नीड्स और शी नीड्स एम्प्लॉइज, तब करेगा. तो वो कब होगा? वो तब होगा जब देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिमांड. सो गोइंग बैक टू द फर्स्ट आर्टिकल, we really need to focus on demand side, when then all these things will automatically take care of themselves. Anyways, so coming to the last question is that कि क्या India position है to become विकसित भारत by 2047? So who is going to be विकसित by 2047? Surely China and US are going to be विकसित by 2047, ठीक है? Now what is it that China and US are focused upon, or any such country is focused upon? Energy transition and, let us say, transformation led by technology led transformation. So whether that is AI, or whether that is ML, or whether it is robotics, or whether it is anything associated with tech, right, that is going to be very key in terms of productions going ahead. Energy transition and technology transformations, right? So what is it that we can do over here? What is it that the budget has announced, which is bonanza package, really fantastic, etc kind of an approach? Has something come out? Not so much, right? Have we really worked upon these areas? Not so much, right? Now to give some credit where it is due, so the finance minister has definitely indicated that जो economic policy framework है, that will be prepared for the next generation of reforms. So there are 17 items जिनके ऊपर काम करना है, right, which is good. But the point over here is that जो emerging global economic challenges हैं related to technology, related to climate change, related to electric vehicles, related to green transition, ये सारी चीजों के ऊपर we need to do something really massive and out of the box, and something which helps us to leap forward, right?
because every country, whether it is China or South Korea or any of these Vietnams of the world, these countries have leaped forward based on a decisive policy measure that they initiated which worked in their favor. So what is that decisive policy measure जो कि मतलब एकदम ही मतलब बाहर लेकर जाएगा, आपको आगे लेकर जाने में हेल्प कर सकता है? We don't know. Anyways, so some low hanging reforms that the government should target is, right, that it has been nearly 35 years now and we have not really done some comprehensive tax reforms except for the fact that yes, GST was introduced, right? So the budget has suggested that we'll do a comprehensive review of 1961 Income Tax Act. That is good. Unfortunate part is that अभी एक दो साल पहले, दो चार साल पहले ही सिंप्लीफाइड डायरेक्ट टैक्स कोड का जो ड्राफ्ट था उसको सेट असाइड कर दिया गया था. So now the idea is to bring that agenda back on the table. This is our problem, that we bring agenda to the table, debate it, discuss it, work on it, and then throw the agenda out of the window, and then after 2 3 years again bring back the same agenda on the table and say that chalo badhiya kaam start karte hain, right? So this is not going to make any sense unless or until there is some finalization. Similarly, we can think in terms of creating a simple comprehensive code for customs duties. Similarly, we can think in terms of simplifying the GST structure, right? Having said that, right, the important point over here is that we need to significantly scale up and accelerate our progress on next generation of reforms, right? And limited initiatives that we were expecting regarding, let us say, not an AI driven global economy necessarily, but a technology led global economy or a technology led Indian economy, right? These reforms are kind of missing from the budget. These are my two articles that I wanted to discuss. I'll bring this session to an end. We'll meet again and we'll continue our discussion. If there is any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much. All the best and bye bye.